गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां दुग्धसहितायाम् अथेकादशोऽध्याय। ऋषि उवाच। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते। श्राविता दुताशैवी कथा परम पावनी। तथा द्रुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा। श्रुत्वा यस्य प्रभावं च दुःखनाशो भवेतिह। ब्रह्मनारदंसवाद मनुसृत्य दयानिधे। शिवार्चन विधिं ब्रूहि येन तुष्टो भवेच्च वा। ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये शूद्रे वा पूज्यते शिवा। कथं कार्यं च तद्ब्रूहि यथा व्यासमुखाच्छ्रुतं। तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां शर्मदं श्रुतिसम्मतम्। उवाच सकलं प्रीत्या मुनिप्रा प्रशानुसारता। श्रुत्वाच साधु पृष्टं भवदीक्ष तद्रहस्यं मुनीश्वरा। तदहं कथयाम्यद्य यथा बुद्धि यथा श्रुतं। भवती पृच्छते यत्तथा व्यासेन वै पुरा। पृष्टं सनत्कुमाराय तच्छ्रुतं मन्युना। ततो व्यासेन वै श्रुत्वा शिवपूजादिकं च यत् महा च पाठितं तेन लोकानां हितकामया। तच्छ्रुतं चैव कृष्णेन हापमन्योर्महात्मना। तदहं कथयिष्यामि यथा ब्रह्मा वदत्पुरा। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपालिङ्गपूजनं। वक्तुं वर्षशतेनापि न शक्य विस्तरान्मुने। एवं तु शाङ्करं रूपं सुखं स्वच्छं सनातनं। पूजयेत् परया भक्त्या सर्वकामफलाप्तये। दारिद्र्यं लोकदुःखं च पीडनं शत्रुसम्भवं। पापं चतुर्विधं धावनार्चयते शिवं। सम्पूजिते शिवे देवे सर्वदुःखं विलीयते। सम्पद्यते सुखं सर्वं पक्षान् मुक्तिर्वाप्यते। ये वै मानुषमाश्रित्य मुख्यं सनातनात् सुखं। तेन पूजयो महादेव सर्वकार्यार्थसाधका। ब्राह्मणं क्षत्रिया वैश्य शूद्राक्ष विधिवत् प्रमात्। शङ्कराचा प्रकुर्वन्तु सर्वकामार्थसिद्धये। प्रातःकाले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्मसंज्ञके। गुरोक्षसमरं कृत्वा शम्भोक्षेव तथा पुनः। तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं चैव हरेरपि। ममापि निर्जराना वै मुन्यादीना तथा मुने। तथा स्तोत्रं शम्भूनां गृह्णादिति पूर्वकं। तथोत्थाय मलोत्सर्गं दक्षिणस्यां चरे दिशि। एकान्ते तु विधिं कुर्यान् मलोत्सर्गस्य तच्युतं। तदेव कथयाम्यद्य छिन्नबाधाय मनो मुने। श्रुताम्यदं द्विजोलिप्यात् पञ्चवारं विशुद्धये। क्षत्रियश्चतुर्वारं वैश्यवारत्रयं तथा। शूद्रो द्विवारं च मृतं गृहीणीयादिति शुद्धये। गुदेवाथ संकृलिङ्गे वारमेकं प्रयत्नता। दशवारं वामहस्ते सप्तवारं दयोस्तथा। प्रत्येकं पादयोस्तात् त्रिवारं करयोः पुनः। स्त्रीभिक्ष शूद्रवत् कार्यमृद्गृह्णन् मोत्तमं। हस्तोपादौ च प्रक्षाल्य पूर्ववन्मृतमाहरेत्। दन्तकाष्ठं तथा कुर्यात् स्ववर्णक्रमतो नरा। विप्र कुर्यात् काष्ठं द्वादशाङ्गुलमानता। एकादशाङ्गुला राजा वैश्य कुर्यात् दशाङ्गुलं। शूद्रो नवाङ्गुलं कुर्यादिति मानमिदं संवृतं। कालदोषं विचार्य मानदुष्टं विवर्जयेत्। अष्टशाध्यामक्ष्णव्रतमस्तं रविर्दिनं। तथा श्रावणदिनं तात निषिद्धं रुद्रभावने। स्नानं तु विधिवत् कार्यतीर्थादिषु क्रमेण तु। देशकालविशेषेण स्नानं कार्यसमन्त्रकम्।
आचम्य प्रथमं तत्र धौतं वस्त्रं च धारयेत् एकान्ते सुस्थले स्थित्वा सन्ध्याविधिमथाचरेत् यथा योग्यं विधिं कृत्वा पूजाविधिमथार्भयेत् मनस्तु सुस्थिरं कृत्वा पूजागारं प्रविश्य च पूजाविधिं समादाय श्वासनेहापविश्य वै न्यासादिकं विद्यायादो पूजयेत् क्रमशो हरं प्रथमं च गणाधीशं द्वारपालंस्तथैव च दिक्पालाक्षं सुसम्पूज्य पश्चात् पीठं प्रकल्पयेत् अथवाष्टदलं कृत्वा पूजाद्रव्यसमीपता उपविश्य ततस्तत्र चोपवेश्य शिवं प्रभुं त्रयमाचमनं कृत्वा प्रक्षाले च पुनः करो प्रणामाय मत्र्यं कृत्वा मध्यध्याये च त्र्यम्बकं पञ्चवक्त्रं दशभुजं शुद्धस्फटिकसन्निभं सर्वान् भरन् संयुक्तं व्याघ्रचर्मोत्तरीये कर्कम् तस्य सारूपयतां स्मृत्वा धेत पापं नरा सदा शिवं तथा समुत्थाप्य पूजयेत् परमेश्वरं केशुदिं तथा कृत्वा मूलमन्त्रनये न्यसेत् प्रमात् सर्वत्र प्रणयेनैव षड्गन् व्याससमाचरेत् कृत्वा हृदि प्रयोगं च तथा पूजां समारभेत् पद्याघाच मनार्थं च पात्राणि च प्रकल्पयेत् स्थापयेद्विधान् कुम्भानधीमान्यथा विधि धर्भराच्छाद्यतैरेव संस्थाप्या भयोक्षवारिणा तिषु तिषु च सर्वेषु क्षिप्ते पेतोऽयं सुशीतलं प्रणवेन क्षिपेतेषु द्रव्ययान यान्यालोक्य बुद्धिमान् उषीरं चन्दनं चैव पादयतु परिकल्पयेत् जातिकं पूर्वट्टमूलतमालकं चूर्णयित्वा यथा न्यायं क्षिपेदाच मनीयके एतत्सर्वेषु पात्रेषु दापयेत् चन्दनान्वितं पार्श्वयोर्देवदेवस्य नन्दीशं तु समर्चयेत् गन्धे धूर्पेस्तथा दीपे विविर्धे पूजयेत् शिवं लिङ्गशुद्धिं तथा कृत्वा मुद्यायुक्तो नरस्तदा यथोचितं तु मन्त्रोऽर्थे प्रणवाद्यन्मोन्नतके कल्पयेदासनं स्वस्ति पद्यादिप्रणवेन तु तस्मात् पूर्वदिशं साक्षादनिमामयमक्षरं लघिमा दक्षिणं चैव महिमा पश्चिमा तथा प्राप्तिशैवोत्तरं पत्रं प्राकमयं पावकस्य च ईशचित्वं नैरित्रं पत्रं वशित्वं वायुगोचरे सर्वज्ञत्वं तस्थैशान्यं कर्णिका सोमुच्यते सोमस्याध्यास्तथा सूर्यस्तास्याध पावक सत्वयं धर्मदीनपि तस्याधो भक्ता कल्प्येत क्रमत अव्यक्तितादि चतुर्दिक्षो सौम्यशान्ते गुणत्रयं सद्योजातं प्रवक्ष्यामि त्वा परमेश्वरं वामदेवेन मन्त्रेण तिष्ठे चैवासनोपरि सान्निध्यं रुद्रगायत्रा अघोरेण निरोधयेत् ईर्षानं सर्वविद्यानां मिति मन्त्रेण पूजयत् येत पाद्यमाचमनीयं च विद्ययार्घ्य प्रदापयेत् स्थापयोदिदिना रुद्रं गन्धचन्दनवारिणा पञ्चगव्यविधानेन गृहपात्रेभिमन्त्र्य च त्रन्वेनैव गव्येन स्नापयेत् पयसा च तं दद्धना च मधुना चैव तथा चेक्षुरसेन तु घृतेन तु तथा पूज्य सर्वकामहितावहं पुण्यैर्दर्वे महादेवं प्रणवेनाभिषेचयेत् पवित्रजलभाण्डेषु मन्त्रस्तोऽयं क्षिपेत् तथा
शुद्धीकृत्य यथा न्यायं सत्वस्त्रेण साधका तावद्दूरं न कर्तव्यं न वा यावच्च चन्दनं क्षिपेत् तण्डुले सुन्दरेस्तत्र पूजे छक्करमुदा कुशापामार्ग कपूराजाति चम्पकपाटले करवीरेस्तीक्षेव मल्लिका कमलोत्पले अपूर्वपुष्पे विविधे क्षन्ननादेस्तथैव च जलेन जलधारां च कल्पयेत परमेश्वरे पात्रे च विविधैर्देवं स्नापये च महेश्वरं मन्त्रपूरं प्रकृत्वा या पूजा सर्वफलप्रदा मन्त्राक्षं तुभ्यं तास्तात् सर्वकामार्थसिद्धये प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानतया शृणु पाठ च मानेन मन्त्रेण तथा व्याम्यकेन च रुद्रेण नीलरुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च होतारेण तथा शीर्ष्णा शुभेनाथर्वणेन च शान्तया वाथ पुनः शान्त्या हारुणेन नारुणेन च अर्थाभीष्टेन सामना च तथा देवव्रतेन च रथन्तरेण पुष्पेन सूक्तेन प्रस्तुतेन च मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण तथा पञ्चाक्षरेण च जलधारासहस्रेण शतेन नैकोत्तरेण वा कर्तव्या वेदमार्गेण नामभिर्वाथवा पुनः ततः पुष्पादिरोपणीय शिवोपरि दापयेत प्रणवेनैव मुखवासादिकं तथा स्फटिकसङ्काशं देवनिष्कल्मक्षयं कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परं ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्र विष्णुवाद्यैरपि देवैर्गोचरं वेदविद्भिर्वेदान्ते त्वज्ञो गोचरमिति स्मृतम् आदिमध्यान्तरहितं भेषजं सर्वरोगिणां शिवतत्त्वमिति ख्यातं शिवलिङ्गं व्यवस्थितं प्रणवेनैव मन्त्रेण पूज्यलिङ्गं मूर्धनि धूपैर्दीपैक्षनैवेद्यास्ताम्बूले सुन्दरैस्तथा निराजनेन रम्येन यथोक्तविधिना तथा नमस्कारेस्तवेक्षान्यमन्त्रनानाविधैरपि अर्घदत्त्वा तु पुष्पाणि पाद्यसुविकीर्य च प्रणिपत्य च देवेश मात्मनाराध्य शिवमा हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृताञ्जलि प्रार्थयेत पुनरीशानं मन्त्रेणानेन शङ्करम् अज्ञनाद्यधिवा मानाजपूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर पठित्वैवं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदा न्यस्येत् तथा स्वस्तयनं कृत्वा हाशिषो विदिधास्तथा मार्जनं तु तथा कार्यं शिवस्योपरि वै पुनः नमस्कारं तथा शान्ति पुनराचमनाय च अघोरमन्त्रमोच्चाय नमस्कारं प्रकल्पयेत् प्रार्थये च पुनस्तत्र सर्वभावसमन्विता शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम इति सम्प्रार्थय देवेशं सर्वसिद्धिप्रदायकं पूजयेत् परया भक्त्या गलनादैर्विशेषता नमस्कारं तथा कृत्वा परिवारगणैः सह प्रहर्षमतुलं लब्ध्वा कार्यं कुर्यात् तथा सुखम् इवं य पूजये नित्यं शिवभक्तिपरायणा तस्य वै सकला सिद्धिर्जायते तु पदे पदे वागमी स जायते तस्य मनोभीष्टफलं ध्रुवं रोगं दुःखं च शोकं च आहुदेगं कृतं तथा कौटिल्यं च गरं चैव यद्दुःखं
उपस्थितं तद्दुःखं नाशयत्येव महादेव शिवापरा कल्याण जायते तस्य शुक्लपक्षे यथा शशि वर्धते सद्गुणस्तत्र ध्रुवं शङ्करपूजनात् इति पूजाविधि शम्भो प्रोक्तस्तु मुनिसतम् अतः परं च शुश्रूषु किं पृष्टासि च नारदा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां प्रथमखण्डे सृष्टुचुपख्याने शिवपूजाविधिवर्णन नामेकादशोऽध्यायः।